नमस्कार दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 7 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 5 ट्रांजिटिव एंड intransitive verbs. So let's see worksheet 1. Look at the following picture and write the various actions being performed by different people. तो इस पिक्चर में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, क्रिया को संपादित कर रहे हैं. सो जैसे ए इज़ ईटिंग पॉपकॉर्न, नाउ बी इज़ रीडिंग बुक, सी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, डी इज़ drinking cold drink, E is catching fish, F is making sand castle. Okay, so you will write here. Now did you notice that the action denoted by the verbs written by you pass on to their objects? जैसे A is eating what? Popcorn. तो ये जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो पास कर रहा है पॉपकॉर्न पे, यानी कि ऑब्जेक्ट पे. Here you see example, the action eat passes on the object receiver popcorn, eat से popcorn, similarly kick से football. Now you see verbs which carry the action of a subject to an object are called transitive verbs. तो जो verb जो है, सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाता है, को ट्रांसफ़र करता है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. आई होप कि आपको समझ में आया. अगर नहीं आया तो घबराने की बात नहीं है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. जैसे आप देखिए, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ. मानव, निक्की एंड रुचि वेंट फॉर शॉपिंग लास्ट संडे. मानव saw a toy shop in the market. The shopkeeper had displayed various toys in the racks. Manav liked a small toy car. Ruchi bought it for him. He opened the box and examined the car carefully. He put the car in his bag and discarded the box. While returning, he drank fruit juice and ate his favorite ice cream. He enjoyed the outing a lot. Now complete the table given below by filling in the subject, doer and the object, receiver of the action of the following verbs in the above paragraph. So look here. Now you see Manav saw a toy shop. मानव saw a toy shop. मानव ने क्या देखा? मानव saw what? मानव ने क्या देखा? A toy shop. टॉय शॉप जो है वो ऑब्जेक्ट यानी कि रिसीवर है, तो आप उसको यहाँ लिख देंगे. एक्शन सॉ है और सब्जेक्ट कौन है? मानव है. तो सिमिलरली उसी तरह द शॉपकीपर हैड डिस्प्लेड वेरियस टॉयज़. अब नाउ लाइक्ड जहाँ एक्शन है उस मानव यहाँ पे है. मानव लाइक्ड ए स्मॉल टॉय कार. तो मानव इज़ द सब्जेक्ट. मानव लाइक्ड व्हाट? तो a small toy car. Okay, you will write here. Now bought Ruchi bought what? Ruchi bought it. So you will write here it. Ruchi bought it. Okay, now opened. He opened the box. He opened what box? So you will write like that. He opened box. So you can feel this worksheet in this way. It is very easy. Now let us remember, transitive verbs always answer the question what or whom if the object is a living being. whom से तभी प्रश्न करेंगे जब हमको
लिविंग बीइंग कोई ऑब्जेक्ट है तभी। जैसे कि ये टॉय शॉप और टॉयज़ जो है वो क्या है, वो लिविंग बीइंग्स नहीं है, तो हम लोग व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन किया था कि मानव सॉ ए टॉय शॉप, मानव सॉ व्हाट, ए टॉय शॉप, तो आंसर क्या आएगा, टॉय शॉप आएगा। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण है, यानी कि सॉ एक ट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण है, ठीक है। तो आई होप कि कुछ आप समझ गए होंगे। तो वर्कशीट 3 पे आते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट व्हाट दीज पीपल आर डूइंग। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। सो you see that G is dancing, H is sleeping, I is jumping, J is running, you can say, or H is K is doing is going. What this he is doing, I don't know. So you can write like that. Now G is dancing. You see that G is dancing. Now ask question from what? Dancing what? So there is no answer. Dancing whom? No answer. So you see that action does not pass on to any object. एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट पे पास नहीं होता है। नाउ यू सी, रिमेंबर, ए वर्ब दैट डिनोट्स ऑन एक्शन, ए वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन which does not pass to any object is called an intransitive verb. Example, the verb is dancing, which is a complete action by itself and does not require any object to receive it. तो यहाँ पे ये complete सेंटेंस है, जी इज़ डांसिंग, बट जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। सो आई होप कि आप इनट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। वर्कशीट 4 कल हम करेंगे और फर्दर जानकारी लेंगे। थैंक यू।